Assalamualaikum students, this is Rabia Kamran with YouTube channel Chalo Parho with Rabia. Today I am in front of you with a short trick for finding out squares. If you have got big numbers and you are going to find out square of it, how will you find out? आप इसके अंदर करते ये हैं कि जब आपको बड़े numbers का square find out करने को दिया जाता है तो you use your calculator. But आप ये कर सकते हैं कि आप दूसरे लोगों को हैरान कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट डूइंग एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट इन 2 seconds द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स व्हिच एंड्स ऑन 5. Later on we will be discussing other numbers also in next videos. Okay, now I am taking here 25 square. You can see that it ends on 5. जब आपका नंबर 5 के ऊपर एंड हो रहा हो and you are going to find out square of that, don't use your calculator. कैलकुलेटर के यूज में या आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप यकीनन इसको लिखते हैं 25 into 25. No need to do that in this method. What will you do? You just take this 2. 5 से पहले जो नंबर है वो आपके पास 2 है, 1 digit number. What comes after 2? 3 comes after 2. So you will multiply 2 3s are 6 and there would be 5 5s are 25. This is your answer. Without using your calculator, you have taken out your answer. Now I am doing, this is question number 2. Let's take 35 square. Got it? So what will you do here? You know what will come after 3? It is 4. 3 4s are 12 and 25. That will be your answer. यहाँ आप देख सकते हैं कि लास्ट के जो 2 digit हैं वो 25 ही बनेंगे. Got it? If you will solve with your calculator, you will take time. Calculator takes time to find out the square of this number. Got it? But here you are writing in a jiffy. In 2 seconds you are writing your answers. Got it? Now number 3, I am taking 65. What would be your answer? You will do the same. 6 7s are 42 and this is 25. This is your answer. है ना मजे की ट्रिक. अब आप नंबर 4 पे चले जाइए. देखिए और बड़े नंबर्स ले लेते हैं. 95 square. What will you do here? 9 10s are 90, 25. This is your answer. 9025. Got it? Is it clear all of you? I hope that you are enjoying a lot. यहाँ अब हम ले लेते हैं 85 square. How will you solve that? 7225 would be your answer. Number 6. This is 75 square. What it would be? 5625 would be your answer. जितनी देर में आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर इस नंबर को टाइप करते हो, उसका स्क्वायर निकालते हो, उस टाइम से भी कम में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है? This is an amazing trick to find out the squares of big numbers. Number 7 हम ले लेते हैं 105 square. 10 11s are 25. That would be. Got it? Now number 8. I am taking 125 square. How will you solve that? 12 यहाँ मौजूद है. Now there are 2 digits. जैसे यहाँ 2 digits थे, 10 था, तो हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लिया. Here I will multiply this 12 by 13. That would be 15625. इसके लिए ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि what is 12 multiplied by 13 और what is 10 multiplied by 11. अगर आप टेबल से आपको याद है up to 15, then you can find out easily. यहाँ 15 तक का नंबर आप बहुत आसानी से निकाल सकेंगे. Now this is 8. 135 square. Now how will you solve that? The same thing. 13 14s are 18225. This is your answer. So आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रिक हम आपको बताएंगे जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे squares of those numbers which do not end on 5. Thank you.